So good morning, everybody. I would like to formally welcome you all. And this is a workshop on how to create effective videos to make your presentation stand out. I hope this workshop will be helping you out, whether you are from technical background or you are from non-technical background. This is going to help you out. As I was explaining that even in technical, whenever you need to give some presentations, whenever you need to put up your ideas, so ideas needs to be presented in the form of images, in the form of presentations or videos, and that is the best way of representation today. If you write something that doesn't nobody bothers to read it because it takes time, so attention span is very less, so it is always better to have some kind of image rather than text, and then it is always better to have some sort of videos rather than image also. So this is basically how I would like to start this and invite Mr. Ritik Rajgire. He is the expert today. He has been working into the same domain, so he'll be guiding you. So I would directly like to invite Ritik to kindly introduce himself. And because I am out, so I may not be available for all the time. So I'm sorry for that. Yes, Ritik, you can introduce yourself and start. Thank you for Yeah, coming here. So let me thank you stop so sharing. much, You can Kushal you ji. can start. Yeah, Yeah. thank you so much, Kushal ji, for the beautiful introduction of mine. So, basically, let's introduce myself first, and then we will talk about everyone. So, myself, Ritik Razgire, I am the founder and today's coach. I am a video editor from 3 years. I have my expertise in video editing from 3 years. I have worked with many big companies, big clients in my last 3 years, and I have taught more than 400 students, including 8 countries of students, by the way. So I'll very thankful to Kushal sir for giving me this opportunity to speak, to present in front of you all. So this session is specially not going to be a very boring or kind of something. This will be a very interactive session. You can anytime unmute yourself. You can anytime, if you hesitate to unmute yourself, you can raise your hand. There is an option of raising the hand. You can raise your hand, or if you have any query, you can put it in the chat box. But preferable is you can unmute yourself, because we want to make this session very, very, very interactive. So before starting, I just wanted to make let's take a quick introduction, your name and what you are doing, and have you ever worked on any software. So I just wanted to know from each and everyone. Let's have the quick introduction of each and everyone. So I request Aparna, please, can you please unmute yourself and give a quick introduction of yourself. Are you there, Aparna? Yeah, I would just like to add. This is related to video editing software. I believe you are asking, correct? Video Yes. or that way. Yeah. Okay, yeah. Because these are technical people, so they'll start thinking that which software. Yes, Yeah. yes, So yes. because this workshop is related to video and presentations, so think in that perspective. Yeah, So yeah, correct, correct. let me pause my off my video. Allow me to do that. And once Yes, again, best wishes for this whole workshop. yes, thank you, thank you. Okay, so this session is going to be a fun, because we will never think about the video editing and the presentation are interlinked in each other, but they are linked in each other. Okay, so just let me ask one thing. If you have two options in your free time, अगर आपके पास दो ऑप्शंस है कि अगर मुझे कोई मेरे सर बोलता है कि ऋतिक, अगर आपको दो चॉइसेस दिए जाए, अगर आपकी फ्री टाइम में आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है और आपको एक नेटफ्लिक्स की मूवी दी है या सीरीज दी है, तो विच वन विल यू प्रेफर? तो ऑब्वियसली अगर मुझे दो ऑप्शंस दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना है और दूसरा जो है हमें एक नेटफ्लिक्स का मूवी देखना है, सो ऑब्वियसली आई विल चूज नेटफ्लिक्स मूवी रादर देन द प्रेजेंटेशन. व्हाई? So, is there anyone who can tell me why Netflix की मूवी या Netflix की सीरीज मैं प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ वाचिंग द प्रेजेंटेशन? क्यों मैं प्रेजेंटेशन नहीं देखूंगा और क्यों मैं एक मूवी देखूंगा मेरे फ्री टाइम में?
कोई बता सकता है? If someone can raise your hand or By watching animation and characters, we can understand easily as correct, compared to script. correct, great. And can anyone please give me one more answer? Yes, sir. Yes, Hi, Rajeshwari. sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. With the if I have two options, watching presentation and Netflix or something series like that. So Mhm. in series, I would like to find. I find that audio video thing is there and some story is there. So Correct, that is actually interesting rather than watching that presentation. In presentation, maybe I don't know that what is the content, what's the story behind that. I have to find out that. But in Netflix, it's totally vice versa. That correct, I don't need to find that. They are telling me what's the story behind that, and actually that was so interesting. That correct, everything. That's why I've obviously I'm also selecting the Netflix. correct. Um, Very nice. So the thing is, if we see a Netflix movie and a presentation, a Netflix movie or any platform has a story behind that particular movie, and the presentation does not have any kind of story. It's a typical presentation, your name, your topic name, and that bullet points and everything, that same thing, correct? So but at the Netflix movie there are no such things. There are suspense, there are story, there is a hero, there is a character, correct? So just tell me one thing, what if we give our presentation a story? Netflix movies are why important, why interesting? Because they have story. So what if we take this story into our presentation? Don't you think our presentation will be more effective? If you think it's, then you can give me a thumbs up or raise your hand that you agree with me. Correct? Great. So this is the thing. So in this session we are not, one thing I want to mention, that I'm not going to open any PowerPoint today. I'm not going to open any Microsoft software today. Why? Because we don't want this typical software or typical things to be included in our session. We want to make it fun. We want to make it more interactive. So what we are going to do is, so let me just share my screen first. And one more thing, again, I want to tell you that we are not going to open the presentation. What we are going to do is we are going to open the notepad. Okay, so because notepad is my favorite thing. Okay, so guys, so in this today's session we are going to talk about video editing software in which you can edit your videos to make your presentation wow. Okay, so let me just type the software's name which we are going to learn today. So the software we are going to learn today is Adobe Premiere Pro Premiere Pro CC 2020. Okay, so if you want to install in your computer, you can download it from Adobe site. So the minimum configuration to download this software is, you have requirement around 4 to 8 GBs of RAM in your computer. Then you have any kind of integrated graphics card, and well, if you have Windows 10, it will be perfect. Okay, so if you have this configuration in your computer, it will be amazing and you are ready to use this software. Okay, so just tell me one thing, if anyone can unmute and tell me, uh, before starting the presentation, what things are important? Can anyone just unmute yourself and tell me what is the important thing while starting the presentation? Oh, yeah. Hello, sir. Anyone? Yes. Yeah, before starting any presentation, first thing we have to keep in mind that what is the concept of our presentation, like what Okay. we want to present actually. Uh, Uh,
Okay, Yeah. just let me write here. So you are talking about concept, correct? Yes. Yes, sir. Okay. Again? Like, what is the topic of my presentation? While presenting anything, sometimes it happens that we divert to another topic, so we don't have to divert to the other topic, right? So Correct. first thing, we have to clear about our topic. Second thing is about the timing, like if it's too late or too short, then it's maybe not so impressive or something. Correct. Like always we see that if somebody is explaining this presentation about 10 minutes or something, people gets bored about that. Correct. Yeah, so we have to make sure that we are giving our best to just to clear the main objective of our project rather Correct. than going here and there. Okay. Second thing is what our presentation, it looks so impressive, like no, nothing is boring in that. Mm-hmm. Like sometime it happens that our topic is something else, we just give the title of that, and below that we have given a lot of paragraph, and Correct. while giving presentation somebody is just reading that paragraph. That might be so boring, nobody is going to listen to that. So we Correct. have to take care of that, like what is the content of that actually. Correct. We have to keep it so short. And Mm-hmm. other thing, what can I say? Maybe the color combination or decoration, Correct. something we can say that. Correct. Great. These, Okay. yeah. So you're talking about color scheme and Yes. okay. Thank you so much, Rajeshwari. Thank you. Anyone wanted to share their thoughts on this? What is the preparation we want to done while starting our presentation? Anyone? Just to add on what Rajeshwari said, Yes. we don't know who will be the viewer, that whether we are using some technical tools, that Mm-hmm. it is not necessary the person who will be watching our presentation is Okay. necessary that he will knew that technology. Correct. So it is important that when we are preparing for presentation, we must ensure that it will be understandable for everyone. Correct. Yes. Correct. Correct. Great. So we are talking about the audience, which audience we are going to talk about, and will the audience will understand what we are going to talk. Correct. So yeah, great points. So just one thing I want to ask before starting the session: is this session is interactive or interesting, or is it boring? I just wanted a quick feedback of yours. It's really interesting, sir. There is no doubt. Like we are going to board and all. Okay, so if someone feels that it's a boring session, please tell me. And if you think that it's a kind of interesting session, you can give a thumbs up or something so that I can understand. Yeah, it is helpful. Okay, so great. I am having a lot of raised hand. Thanks a lot. Thanks a lot, everyone. So, okay. So these are the things. So thank you so much again. Thank you a lot. So one thing I want to add in this topic is the content. Okay. The one thing, the first thing is content. Let's say you have concept, you have topic, you have taken the duration of presentation, you want to make the presentation interesting, you have decided the color scheme, and you have decided your audience, which will be the audience. But the most important thing is content. Which content you are going to put in your presentation, correct? So the most important thing is content. So what is content? So content is anything, like if you have script is the content. Then if you have any audio is the content. If you want to add images, videos, or anything, it's also the part of content, correct? So content is the necessary part while creating a presentation or a video. Okay, so Rajeshri, you raised your hand. Do you have any query? If no, you can unraise your hand. Okay. Okay,
So yeah, so the content is the most important thing. So what we are going to do is today we are going to create a presentation, a kind of film presentation. I'm not going to create that that boring presentation, name of the topic, how to create presentation, and then topics to be covered, and this presentation, I hate that presentations. Okay, so what we are going to do is today we are going to create a film presentation. Okay, so for that thing I have a small script, I have presentation script. Okay, so what we are going to do is we have our content. First content we have, let's talk about what content do we have. So content, first content we have script. Okay, again what we are going to do is in the content I want my audio in my video, correct? So we are going to record a voiceover. Okay, so this is our second content. Then third content we will need videos. So I'm going to share you where from where you can take the videos and your content. Then we will need a audio, a BG audio, background music audio. Okay, and yeah, this is a basic mota content that we are going to include in our video. Okay, so we have script. So again we will record our voice in software, don't worry about that. So for video and BG audio there are some website called mixkit.co. Okay, so there is a website called mixkit.co. Here you will find the stock videos, stock music, stock sound effects, and video templates. It's very amazing site. I 100% prefer recommend you to use this site. It will make your presentation wow. Okay, so if you go to stock video and let's say I'm typing presentation, okay, and I'm searching it. See, we have videos, stock videos. Have you ever seen YouTube videos? There is a background music and some videos are playing. Some foreigners are coming and they are doing something and there is a background music. So this is the same website where you can find the stock videos. Okay, so this is our website. Here we can find some videos, and if you want music you can just go to down below here and click on music. From here you can get the music, correct, this kind of things. So you will get background music. Yes, anyone muted? Okay, okay, let's start again. So this is a website where we can find music, audio, templates, and sound effects, everything. Okay, so it will be a very helpful to us. So let's talk about our script. What is our script? Let's talk about this. So are you willing to give a presentation which makes your audience say wow, but same PPT, same templates, again the same boredom? Don't worry, video editing will make your audience may say wow. So are you talking about graphs? See this. Are you giving the example of car or anything? We will make your presentation live. So this is our script. So according to this we are going to set our content. Okay, so let's see, are you willing to give a presentation which make your audience say wow? So for this we are going to take a footage from mixkit.co and I am typing in presentation. Oh. Okay, so I'm searching it. So I'm downloading this. So this lady is giving presentation. So I'm downloading this video. Hey, video creator. Okay, so it will download in some time. So again I'm downloading this video. Download low resolution. Then again let's download another video. uh let's download this thing.
download low resolution, and let's download this video. Okay. Okay, so we have the videos for this line, we have videos for this line as well. So now we want a footage for video editing, so I'm typing here video editing, video editing. So in this video editing, I'm downloading this footage, download low resolution, and then a lady saying wow. If you have this footage, no, we don't have. Let's type amazing. If we get something in amazing, no, we don't have anything for this type of particular thing. Okay, so let's download video editing footages. This video, download low resolution. Okay, and again we have for this thing, we are going to, whenever we start our presentation, there are some graphs, right? There are some graphs, and that boring graphs, still graphs, this percent, this percent, this percent. But in this video we are going to talk about, in this session we are going to talk about how to animate this graph. Let's say 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, right? These things we are going to cover. So we are going to create this in our software. And this thing, are you giving the example of car? Let's say you are giving an example of car that it's going from left to right, or you want to create an animation of a bicycle running or something like that. So we are going to see the animation part in the today's session, or anything. Okay, so we have our basic content ready. Control E, Windows E, sorry. So I have downloaded my videos. So guys, before starting the session, before starting the video editing, the things you have to keep in mind is create a folder, create a new folder, create a new folder, and name it whatever the presentation you are creating. Let's say I'm creating a presentation about effective presentation. Okay, so my folder name will be effective presentation workshop. Okay, so I'm going to my D drive. I'm going to, sorry, E drive, and I'm creating a new folder called effective presentation. Okay, effective presentation. Inside it, I am going to create 5 more folders. Okay, so which are the folders? Master. Okay, again we are going to create new folder called audio. Again we are going to create new folder of videos, then new folder for images, and the final one is of render, or you may call it final output. Okay, or instead of final you can type in output. Okay, so fine. Any doubt till now? Any confusion? Is this session is boring or something? If you have any doubt, I'm giving the 1 minute time. You can ask anything. No, sir. Okay, so is anything fine till now? Anything you want Yes, to? yes. Okay, fine. Okay, so what is the first step to edit our videos, to create our presentation? The first step is to open our software. Okay, so which software we are going to learn about is Premiere Pro CC 2020. Okay, so I am starting my software, so it will take a bit time if your system configuration is a bit low. Okay, so it will open in some time.
Okay, great. So it's open. Okay, so whenever you start your Premiere Pro, okay, a pop-up will appear like this home pop-up. But sometimes what happens is this pop-up will not open maybe. Okay, so if you don't have this option like this, sometimes you will see interface like this. Just go to file, click on new. After that, click on new, create or click on project. Okay, great, easy. So type your presentation name. I'm typing presentation effective presentation underscore v1. Okay, and click on browse and select our folder where we created our folder effective presentation, and go to master file. Here we are going to save our main files, okay, Premiere Pro files, and select folder and hit OK. Don't worry about these things. This is nothing. Okay, so don't worry about this thing. We are going to focus on these two things. Okay, and hit OK. Okay, very easy, very easy. So now we are going to have fun. We are going to see the magic inside the Premiere Pro. Okay, so it will take a bit time if your system configuration is low. Okay, so whenever you start your Premiere Pro software, you will see a interface like this. Okay, so sometimes if your interface is not like mine, just hide it. Let me hide this thing so that you can see the full screen. Okay, so if your interface is not looking like this, you will see options like this: learning, assembly, editing, color effects, audio, graphics, and libraries. So what you have to do is click on graphics, right click and click on reset to saved layout. Okay, after clicking to reset to saved layout, you will see a interface like this on your screen as well. Okay, so very easy. So don't worry about this thing. This is a huge mess. What is this? What is this? What is this? What is this? I'm not getting what is this. So don't worry, I'm here to help you. It's very easy. It's a software like, you know, KineMaster, InShot, and Filmora Go and everything. It's very easy software. Okay, so what we are going to do is we are going to see the interface, basic interface of Premiere Pro. What is the use of this tool? What is the use of this tool? What is this? What is this? Okay, basic things. Okay, so if you want to adjust these panels, you can, you know, left click on the edges and drag it like this. Okay, very easy. So this is a panel called project window. Okay, what is this project window? If you double click over here, you can select your footages, right? So where is our footages? So our footages is in downloads folder, but we don't want to select it from download folder. So select all these footages, Control X, cut it and paste it in our footages folder. Okay, very easy. Why we have created this folder? Because everything which are going to edit in our, okay, so it's crashed, so we have to open it once again. Premiere Pro 2020. Okay, so what I'm saying, whatever the editing, whatever the, you know, content we have will go in this particular folder only. So we have videos, so I placed all the footages in this videos folder, and after that we are going to take some images. So images will be in this particular folder. If we have audio, audio will be here, and the final output, that render we are going to use, will be on this folder. Okay, so I'm opening my presentation project. Okay, so to import our footages, just double click over here and select our folder. Where is our folder? Effective presentation. Double click, go to videos and select all these footages and import. Okay, so we have these footages here. So let's say you don't want to left click, double click and select. Okay, so instead of that, what you can do is just left click and drag it in this what we say project panel. Okay, so in that way you will able to, you know,
find the videos, you can import the photos, videos, oh, is my voice is audible now? I guess I was left from the meeting a bit time before. Yes, sir. You are audible. Yes. Yeah, I'm sorry. So till what part you have heard? I'm very sorry. Sir, video import किया था. Yeah, okay, okay, thank you. So what we have done, we have imported the video. So software is crashing today, I don't know why. Maybe streaming चालू है तो maybe sometimes it happen, क्योंकि Adobe Premiere Pro is a very heavy software, तो sometimes it may happen that your software will crash, but don't worry, just save your file every time. Okay, just control S, control S, control S, whatever you are doing, just control S it. Okay, so okay, fine. So this is the interface like our regular KineMaster, Filmora Go and everything. So it's very easy. Okay, so if you want to edit our footages, you can drag it from here. Again, we have this panel where you can see our footages editing and everything. Here we have some title animations. Someone wants to join. Okay, fine, great. So now we have this panel. If you click on any video, any footages, you will see some options here, video and scale and all these things. We are going to go in deep. So before starting, what we have to do is record our voiceover. Okay, so I am recording my voiceover. Where is my script? So my script is on here. So what I'm going to do is I'm going to record this script. Okay, so for this I'm starting my recording. So how to record audio in Premiere Pro? So very easy. Here is an option of microphone. It is known as voiceover record. Okay, so just left click over here. So let's start the recording. So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry. Video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? See this. Are you willing to give the example of car running? Or anything will make your presentation live. Okay. So let's dive into it. Okay, so we have our recording here. So let's listen it. So let's start the recording. So are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry, video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? See this. Are you willing to give the example of car running? Or anything will make your presentation live. Okay, so let's dive into it. So we have recording. Everyone understood how to record the audio. Everyone can unmute yourself and tell me, is it okay or something you want to mention in it? Is it okay to each and everyone? Can I have some reactions? Is my voice audible, everyone? Yes, sir. But what we record is not audible to us. So it's not audible.
Okay, just let me stop share my screen, and let me just again share my screen. Just listen once again and tell me. So let's start the recording. So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? No, sir, not No, sir, audible. audio is not coming. Audio is not coming? Yes, No, sir. sir. Okay, 1 second, and tell me now. So let's start the recording. So, are you willing to give a presentation which makes your Now it's audible. Okay, it's audible now. Okay, so I guess it's a Yes, sir. problem with my microphone, so I have to remove my microphone for a while. Okay. So yeah, so we have this audio, so everyone understood. So how let's to start the recording. Remove the how to record a voiceover in the Premiere Pro. Just left click and click over here. You will start your recording. Okay. So are you willing to give a So don't you think it's a story now? It's not a presentation. What do you think? Is it a presentation or a kind of story here? Sir, we are moving towards story. Yeah, so I guess everyone is not giving a response, so I think I'm boring you. Is it so? No, sir. Really? No, sir. Okay. So in between of the session, you can pitch in or talk with me so that I can understood that कि session अच्छा लग रहा है. So like that. So let's go to our software. So if you click on spacebar button. So let's start the recording. So are you willing to give a presentation? So let me just exit the Zoom. Zoom is not, we don't want Zoom now. Or let it be. Okay. So are you willing to give a presentation? So we have our videos of presentation video. So I'm putting this video here. So are you willing to give a like this? So you can drag and drop your videos here. So are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same. Okay. So we don't want this now. Okay. So we don't want this full footage. So we want to cut this footage. So how we are going to do that? Just hit Control plus K. Which button? Hit Control plus K. You can write down this shortcut. If you want to cut this video, just hit Control plus K. Is my voice is echoing? Is there any echo in my voice? No, sir. It's clear. It's clear, no? Thank you. Okay, so if you want to cut a video from anywhere, you can delete. Just hit Control K and delete this footage because we don't want this. So are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same. So again, we are going to take the footage, another footages. PPTs, same templates, again the same board. Same PPTs, same templates. Same templates, and I want to cut this video from here. Delete, and then let's take another video like this. Let's drag and drop this video here. It is same templates, again the same boredom. But don't worry. Video editing will do. Okay, so I want to video editing and Control K and delete this, and then import a video like this. Video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs?
and hit Control K and delete this footage. Also go to front and we don't want this audio, starting audio, so Control K and delete it, and select all the footages and drag it like this. And I'm doing full screen. So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry, video editing will make your audience may say wow. Interesting? Is it interesting? I just want a quick feedback of everyone. Yes, sir. Yes. So if you create something like that, if you are creating a presentation or of data analytics and everything, and on the at the starting of the presentation we give our title name. If you just put your story before starting the presentation, that I'm not a engineering student, so I don't know anything, or I'm not an MBA student or anything, so I don't know about your topics. But let's say you are data analytics and you are saying that welcome to my presentation, and like in this session I'm going to talk about the data analytics. So if you see in today's world, this amount of people are learning data analytics. So what we are doing, we are creating a suspense, correct? We are creating a suspense for this particular that presentation. So this is our first part. So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry, video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? Okay, so I guess this part is clear. So there is nothing more in it. So let's talk about animations. Okay, so how to give animations to a graph. So for that thing, we have to create a graph. So what I'm doing, I'm clicking on this panel, new item, and taking a color mat. Color mat is nothing but a background color. So I'm taking a whitish color, hit OK, and drag this color mat. So we have white background. So we want to create a graph. Okay, so I'm not going to create a very complex graph, I'm just creating a simple graph. So to create the bars, what you have to do is just go to edit panel, click over new layer and click on rectangle. Okay, so we have this rectangle, correct? So here are anchor points from where you can adjust the values, or you can create the whatever you want, like this. Okay, so we have this first graph. Again, what I'm going to do is create new rectangle and put it like this, like this. Okay, very simple. Again, I'm going to take another new layer and rectangle, and I'm putting it over here. Okay, got it. So we have this basic graph. So it's not looking very nice, but you can do it more precise way. Okay, so we are talking about animation, so I'm not bothering more about the this thing, placement and all these things, like this. So let's say this is not aligned, so just right click over here and uh, right click over here and say show guidelines, not guidelines, sorry, show rulers, and drag this ruler like this and zoom it from here, zoom it from here and put it like this, like this, and like this. So it's aligned now. Okay, so every 5 minutes just control S it. Okay, okay, so let's have fun now. So what we want, this graph, there is nothing now. We want something like that. This graph will be come from downwards to upwards, again that this one and this one, like this. Okay, so how we are going to do that, how we are going to do that?
So just click on the first graph. Okay, are you able to see this circle button here, everyone? Please tell me this Yes, Yes, circle. sir. sir. Okay, Yes, so sir. what is this? This is anchor point. Okay, what is this anchor point? So let me just scale it. So we have this graph, sorry, we have this properties. This is position. So if you want to make this bar left to right, you can do it from here like this. If you want to make your graph up down, you can do like this. Let's say you want to scale it, so you can do it from here. Then if you want to rotate, you can rotate it from here. Okay, control Z. And then if you want to make your graph transparent or something like that, you can do it from here. So tell me one thing, whenever I am rotating, from where it's rotating? Whenever I am rotating, it's rotating from center, correct? Are you able to see this circle in the center? So before starting animation, just put this circle here, again click on shape, and again put this circle in the center. And now I'm scaling my graph. Okay, so again I'm scaling my graph. It's scaling from, just put it like here. And now I'm scaling my graph, it's scaling from the this part. Okay, if I'm rotating my bar, it will rotate from this anchor point. So this is known as anchor point. So whenever you are editing your footages, make sure this anchor point is on the same line. Okay, so let's talk about animation. So what we want this graph will be come from 0 to this point. So just click on this scale arrow and hit not uniform scale. Okay, so scale width, this is width, and where is height? This is height, correct? So we want 0 to 100, correct? So how we are going to do that? Just click on the icon over here, scale height icon, go to some hit 0 here, enter, go some frames forward like this, and click 100. And now let's play. See this. See this. Everyone See getting this. this? See this. Any confusion till now? If this part is not clear, I am going to cover this once again. Is it confusing a bit? Tell me. Everyone getting? Please unmute yourself and tell me. If you want, I can, explain it once more. Yes, sir. Can you explain once more? Yes, sir. Please explain. Okay. Explain once again, sir. Okay. So let me just delete all these graphs. Okay. Let's discuss on this graph only. Okay. Okay. Let's delete this also. Just click on new. Click on rectangle. Okay. This one clear. How to take rectangle? Please, everyone, just be unmuted. Okay. And just tell me on every step that if you are getting or not getting. Okay. So you know how to take rectangle, correct? Everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are putting this rectangle on this point and making it like this. Okay, everyone? Yes. Yes, sir. So we are only adjusting it. Okay. So after that, what we are going to do is we are going to take this anchor point to the bottom. Why? Because we want our graph to be like this, correct? So we are putting this anchor point here. Okay, so after that we are clicking on vector animation, vector motion, and again we are putting this to this part, and we are clicking to motion, and again we are putting this anchor point to this part. Everyone fine till now? What is the next Yes, step? Put all the anchor points here. Got it, everyone?
Any confusion till now? No, sir. No, sir. So tell me one thing, if you want to make it the animation like 0 to 100, we have to scale it, correct? 0% to 100%, scale it. Okay, so we have this property called scale, and untick this uniform scale option. If you have ticked this option, the scale will be width and the height will be scaled automatically, but we want only height animation, correct, from 0 to 100. So for that thing, what we have to do is just untick this and see, we have two options, scale height and scale width. So we want scale ka animation, correct, like this. So just understand one thing, कि प्रीमियर में जब भी आपको ये घड़ी का ऑप्शन मिलता है, उस प्रॉपर्टी को आप एनिमेशन दे सकते हो। कभी भी अगर आपको एनिमेशन देना है और उसके सामने अगर ये घड़ी का ऑप्शन है, तो आप उसको एनिमेशन दे सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आपने गाड़ी चलाई होगी, मे बी बाइक और कार, तो अगर हम एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, बट गाड़ी आगे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गाड़ी जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर हम गाड़ी को गियर में नहीं डालेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, करेक्ट। तो आगे गाड़ी बढ़ने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को क्या बोलना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर गियर डाल दो। तो गियर कैसे डालेंगे? ये जो घड़ी का ऑप्शन है, हमें वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इस घड़ी को क्लिक करेंगे तो हमारा जो एनिमेशन का प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एट दिस पॉइंट ये कौन सा है, 15 सेकेंड को मेरा जो ग्राफ है वो 0 होना चाहिए, लाइक दिस। गॉट इट? और मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन द 16th फ्रेम को मेरा जो ग्राफ है वो 100% होना चाहिए, लाइक दिस। गॉट इट एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if I am playing this, Are see you- this, Are you, everyone got this? are you will- are you Got it everyone? If you want to animate, scale animate, what you have to do is tell the software that on this point we want the scale 0, and after the 16th frame I want my graph to be 100%. Okay, so this is it, very easy. are you are you willing to give the example of car? So Wow. Are you thinking about graph? are you thinking about graphs? So at this point we want to show graphs. Okay, so are you willing, are you thinking Are you about thinking graph? about Are you thinking about graph? So what I can do is, now what if I take duplicate of this? So I am holding alter button and left click and drag it upwards. Okay, so we have two layers of our graph. So just left click over here and drag it, sorry, लेफ्ट क्लिक ओवर हियर, और इसको जो है हम लेफ्ट में लेके आएंगे। ओके, सो सॉरी, कंट्रोल जेड, हम यहाँ पे उसको लेके आए और इसको ऑल्ट दबा के इसको अपवर्ड्स लेके गए, और इसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। सो यहाँ पे दो ग्राफ के लेयर्स हो गए। जैसे हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं, राइट। जब हम एक इमेज है वर्ड में या प्रेजेंटेशन में, हमें अगर वही दिखाना है फिर से, तो हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें डुप्लीकेट लेना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट क्लिक करके उसे अपवर्ड्स लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया, दो ग्राफ्स हो गया, ठीक है। तो Are you thinking about graph? तो अभी हमारा मोटिव क्या है कि पहले फर्स्ट वाला ग्राफ आएगा, फिर बाद में सेकंड वाला ग्राफ आएगा। तो ये जो लेयर है हमें इसको थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा, लाइक दिस, और प्ले करता हूँ मैं। Are you thinking about graph? तो अभी दो ग्राफ्स हो गए, अभी मुझे तीसरा ग्राफ लेना है, और उसमें ऑल्ट क्लिक करके मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और इस ग्राफ को ऐसे लेफ्ट में लेके जाऊंगा, लाइक दिस। Are you thinking अभी इसको थोड़ा इधर लेके जाएंगे। Are you thinking about graphs? See, तो अभी क्या हो रहा Are है, you ये जो thinking तीनों ग्राफ about है graph? ये सेम हाइट के हो गए, राइट। बट हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो सेम नहीं होते। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर पे जाऊंगा, ये सेकंड वाला ग्राफ, इसके इस फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके
इसका जो स्केल हाइट है इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। और सिमिलरली ये जो है इसके ग्राफ पे जाके इस लेयर पे जाके इसका जो स्केल हाइट है वो और बढ़ा दूंगा लाइक दिस। Are you thinking about graphs? करेक्ट, गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आई नो, बट समझ में आ रहा है ये चीज़ कि हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, तो ये चीज़ जो है अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब आप आपके सॉफ्टवेयर में यूज़ करोगे, ये जब आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप जब करोगे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्टीज आएगा, बट अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे रीच कर सकते हो। कुशाल सर विल हेल्प यू टू कॉन्टैक्ट मी, ओके। और उस टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान हो जाएगा। ये क्या है, नया नया जब भी चीज़ कोई सीखता है तो उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट विल बी इट विल बी आसान, बहुत ईजी हो जाएगा ये। ओके, तो अभी क्या करना है, ये सब कुछ कट करना है। यहाँ तक ही मुझे चाहिए था कि मैंने सब सिलेक्ट किया और कंट्रोल के, और मैंने ये सब चीज़ें जो है डिलीट कर दी। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं हमारे स्क्रिप्ट में, लेट्स प्ले दिस वीडियो फॉर वंस अगेन। So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry, video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? See this. Are you willing? ओके, सो अभी हमने क्या बोला कि आई यू विलिंग टू सी ग्राफ्स। सो आई नो कि ग्राफ्स जो है वो और आप इंटरेस्टिंग कर सकते हो। इसमें क्या, अभी मैंने सिर्फ बेसिकली आपको बताया कि इन्फोग्राफिक बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्केल वगैरह, अगर आपको नीचे से अप डाउन दिखाना है या बॉटम से नीचे दिखाना है तो यू कैन डू दिस। अभी लेट्स से यू वांट टू शो Are you अ कार willing to give एनिमेशन, the example of car running? तो लेट्स टेक अ पीएनजी ऑफ कार इमेज, car png vector, okay. Let's take this car. If we have png of it, just go to love take, or you can take this image as well. I guess this is not png. Let's not go into this part. Let's see this. Yeah, we have this. Save image, download it. So now we have png, correct? So just cut this png, Control X. After that just go to images and paste it over here because it's an image, correct? So I am dragging it and dropping it over here like this. See this. Are you willing to give the example of car running? Or any? Correct. So for this thing I just wanted one student or anyone, please tell me how to animate this car. Is there anyone who can tell me how to animate this car? Anyone? I want someone to please answer me how to animate this car. I don't want technical things, but a basic knowledge how to animate this car from left to right. Anyone? Just drag it and just we have copy pasted the graph like earlier. Then we will do it same, like we will paste copy that car from that position to the slightly right side. Okay, so you are saying that what we have to do is just put this car here, and likewise we have given the keyframe to animation of scale. So now we are going to give the animation to position, correct? So गाड़ी Yes. अगर मूव कर रही है तो हमें पोजीशन को की देना पड़ेगा, स्केल को की नहीं देना पड़ेगा, राइट? सो फॉर Yes, दिस sir. थिंग आप अभी किसने आंसर दिया था? आई एम रियली सॉरी। It's Trupti sir. या तृप्ति, तो तृप्ति प्लीज अभी आप थोड़ा देर अनम्यूट ही रहिए और मुझे बताइए, तो सबसे पहले इस गाड़ी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वी हैव दिस ऑप्शंस, तो अब बताइए। सर उसकी पोजीशन जैसे कि ग्राफ में हमने अल्टर करके उसको पेस्ट किए थे, मतलब एक और सेम ग्राफ लिए थे, वैसे ही कार का लेंगे और पोजीशन चेंज करते जाएंगे। अभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक
तो हम क्या Okay. करेंगे, यहाँ पे पोजीशन का की फ्रेम दिख रहा है हमें, Yes, sir. यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाड़ी को क्या बोलेंगे कि इस फ्रेम पे तू यहाँ पे रहो। बट जब मैं Yes. अभी 17 फ्रेम पे जाऊंगा तो 17 फ्रेम पे आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। Okay. तो अभी मैं प्ले करूंगा। Are you willing to? Are you willing? इजी। Are you willing? Yes. Are you willing? तो अगर मुझे कार का एनिमेशन दिखाना है और उसको मैं पहले क्या बोलूंगा गाड़ी को कि पहले आप क्या करो, पहले तो गियर डाल लो। सबसे पहले गियर कैसे डालेंगे, ये जो टॉगल एनिमेशन का बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। आफ्टर कुछ फ्रेम्स के बाद हम आगे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि आपका जो फ्रेम, आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। Okay. तो वेरी इजी। तो अभी क्या करूंगा मैं, गाड़ी यहाँ से आ रही है बट मुझे क्या चाहिए कि गाड़ी बाहर से आनी चाहिए। तो मैं इसका फ्रेम क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा और जब मैं इस नेक्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ तो उसको क्या बोलूंगा कि आप यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको बाहर जाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, Are you willing to give the? अभी ये बहुत फास्ट हो गया। Are you willing? तो इसको स्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एनीवन पता है कुछ कि इसका स्पीड स्लो करने के लिए क्या करेंगे? एनीवन प्लीज, Are you willing? एनी आइडिया इसका स्पीड स्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एनीवन प्लीज। नहीं, ओके। तो इजी है। अगर इसमें का स्पीड अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, ये आपको दो की फ्रेम्स दिख रहे हैं। पहला सॉफ्टवेयर को हमने कमांड दिया था कि गाड़ी यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे कमांड दी थी कि वो यहाँ पे रहेगी। तो ये जो फ्रेम एनिमेशन है 16 to 17 में हुआ है। तो अगर इसको स्लो करना है तो हम क्या करेंगे, ये दो की फ्रेम में इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देंगे। और अभी सी, Are you willing to give the अभी example? स्लो हो गई। और मैं इसको अगर ये करूंगा तो Are you willing to give the example of car running? Are you willing to give the example of car running? लाइक दिस। Are you willing to give the example of car running? करेक्ट, इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। Are you willing to give the example of car running? Or anything will make your presentation ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के और उस चीज को डिलीट कर देता हूँ। अभी आगे or बढ़ते हैं। anything will make your presentation live. Okay, so let's dive into it. और यहाँ पे फिर से एक वीडियो अगर होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर दूसरा डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे वीडियो पुट कर देते हैं। तो अभी एक बार प्ले करके देखते हैं। So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry, video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? See this. Are you willing to give the example of car running? Or anything will make your presentation live. Okay, so let's dive into it. गॉट इट एवरीवन, ये कैसा लग रहा है प्लीज मुझे फीडबैक दे दो अभी के अभी प्लीज। तो आई वांट एवरीवन्स फीडबैक। अभी तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वी हैव, आई वांट सम एवरीवन्स नो व्हाट वी से फीडबैक। सो मोइन, ये कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन अभी फिलहाल? अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है पहले से। ठीक है, पहले से इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा ये चीज़। हाँ सर, प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो और तो बहुत चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें, बट कैसे स्टार्ट करने से पहले मुझे भी समझ में आया कि किसे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो पूजा, आर यू देयर? पूजा खेड़कर, Yes, sir. तो समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ये प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब बोरिंग लगने से अच्छा? नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, थैंक यू। तो विविधा, वी हैव, तो कैन यू प्लीज गिव व्हाट वी से फीडबैक, ये कैसा लग रहा है? सर इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है। तो आप कर पाओगे ये सब चीज़ें? सर आई विल ट्राई। ओके, तो वी हैव प्रियंका। Yes, Priyanka, please unmute yourself if you can. Okay, thank you. Trupti. Yes, sir, all good. Okay. Renuka. Yes, sir. Okay. Rajeshwari.
It's interesting. Yes, thank you, Renika. Yes, sir. It's really interesting. Okay. So now we have five others. Five others. Who is five others? Trupti, Shubham. Yes, Shubham. Shubham. Interesting, sir. Okay. Thank you, Shubham. हेलो सर। Yes. और सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड की सर लिंक भेज देंगे सर। हाँ ठीक है, आप एडोबी के लिंक पे जाओगे तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। या थैंक यू। ओके, तो आई गेस अगर कोई रहा हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है, या वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो हमने देखी अभी, व्हाट वी हैव सीन, सो आई ये प्रेजेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत चीज़ें हैं। लेट्स से कभी कभी ग्रीन स्क्रीन का देखा आपने, मूवीज़ में ग्रीन स्क्रीन होती है और फिर बैकग्राउंड निकल जाता है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं मिक्स किट पे जाऊँगा और वहाँ पे डालूँगा ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, मैं ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ और फिर आफ्टर गोइंग टू ग्रीन स्क्रीन लेट्स यू नो take some footages like this one. Now go low resolution and we have this footage in our downloads, so control X and go to footages, videos, and paste it over it and drag it like this and like this. So let's dive into it. यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा इसको। So अभी इसका ग्रीन स्क्रीन निकालना है, ये ग्रीन स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड लगेगा, इस ग्रीन स्क्रीन के जगह हमें डालने के लिए एक बैकग्राउंड लगेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, ये फुटेज ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। डाउनलोड फ्री वीडियो, डाउनलोड हैज बीन स्टार्टेड। Hey video creators with ओके, सो अभी डाउनलोड्स में जाऊँगा, ये कंट्रोल C और ये फुटेज में यहाँ पे पेस्ट करूँगा और लेफ्ट क्लिक करके हमारे सॉफ्टवेयर में इसको मैं ड्रैग करूँगा, ठीक है। ओके, तो वी हैव दिस लेयर ऑफ दिस मैन और इसके नीचे जो है मैं ये वाला फुटेज डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ग्रीन कलर निकालना है। तो गो टू इफेक्ट्स, ओके, आफ्टर गोइंग टू इफेक्ट्स क्लिक ऑन ग्रीन स्क्रीन, सॉरी अल्ट्रा की, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग इट ओवर हियर। और थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक आई ड्रॉपर का बटन है, इसको लेफ्ट क्लिक करो और ये ग्रीन स्क्रीन निकाल दो। Okay, so let's dive into it. करेक्ट, इजी है, कोई डाउट अभी तक? किसी को भी अगर कुछ भी डाउट है अभी प्रेजेंटेशन में, अभी कैसे हम एंड पॉइंट पे है फिलहाल वर्कशॉप के, तो एंडिंग में कैसा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए अभी के अभी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर ऐसा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सर अगर मुझे ऐसा दिखाना है तो मैं कैसा करूँ, तो अगर ये चीज़ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ अभी के अभी पूछ लीजिए। तो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर जैसे कि आपने भी ग्राफ लिए, वो हमने क्रिएट किए थे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग टैबलू यूज कर रहे हैं तो उसमें ग्राफ जरूरी नहीं है कि जो ग्राफ हमने वहाँ क्रिएट किए वो एग्जैक्टली यहाँ बन सके। तो हम उसे यहाँ पर मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्या, और कॉपी पेस्ट करके उसको एनिमेशन नहीं दे सकते क्या? ओके, उस इमेज को। करेक्ट, तो आपको इमेज को एनिमेशन देना है, करेक्ट? यस तो सर। अभी कैसा है ना कि हम वैसे के वैसे वहाँ पे उसको नहीं ले सकते, बट उसके लिए एक ट्रिक है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मेरे पास मैं पावर पॉइंट पे जाता हूँ, ओके, मैं पावर पॉइंट पे जाता हूँ एक बार। अरे ये पावर पॉइंट नहीं है हमारा,
मुझे पावर पॉइंट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डाउनलोड करके भी नहीं रखता हूँ मेरे पीसी में। तो अगर कुछ लगता है तो ऑनलाइन पावर पॉइंट हो जाता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक बॉक्स अगर इसमें अगर होता है, या इसमें बॉक्स बॉक्स इंसर्ट इंसर्ट, और यहाँ पे एक चार्ट लेता हूँ और बार लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, करेक्ट। तो अगर मुझे ये ग्राफ जो है इसको अगर वैसे के वैसे बनाना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका एक जेपीजी इमेज सेव करते हैं, कहाँ से करेंगे, फाइल, और यहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड एज, यहाँ पे चलो ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है और इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मैं जाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट विंडो में, कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद, या कंट्रोल वी नहीं होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट्स में जाके वो जो फोटो है उसको यहाँ पे लेके यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, और ड्रैग करने के बाद सी वी हैव दिस ग्राफ, करेक्ट। तृप्ति, आपने क्वेश्चन Yes, पूछा sir. था, राइट? Yes, sir. ओके, तो अभी क्या करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रीमियर में वो चीज़ नहीं होता कि आप इमेज को एनिमेशन दो, इमेज को Okay. यानी अगर आपके पास लेट्स से ये इमेज है और इसको आपको हर एक एलिमेंट को इमेज के अंदर एनिमेशन देना है, तो नहीं होता है पॉसिबल, ठीक है। हाँ. बट उसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, आपके पास रेफरेंस इमेज है, करेक्ट। तो आप क्या कर Yes, sir. सकते हो, यहाँ पे न्यू लेयर लो, एक रेक्टेंगल लो, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे पुट करके इसको अगर हम ऐसा करेंगे, इसका एक कॉपी बना लेंगे जस्ट, Okay. ठीक है। ये ग्राफ है, इसका कॉपी बना लिया, इसको और थोड़ा सा जूम कर लूँगा 100%, और इसका जो कलर है, इसका कलर जो है मैंने चेंज कर दिया। अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करो, और यहाँ पे आई ड्रॉप पर क्लिक करके ये जो कलर है वो सिलेक्ट कर दो, और हिट ओके। तो मुझे बताइए कि हमारे पास ये जो इमेज था, तो अभी कलर मैट लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड वाइट है हमारा, करेक्ट। तो हमने वाइट कलर का कलर मैट लिया है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ ये इमेज को, तो सी वी हैव वाइट बैकग्राउंड एंड वी हैव दिस बार, करेक्ट। तो Yes, sir. सिमिलरली आपको क्या करना है, जैसे हमने ये ग्राफ लिया, तो सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल लेना है, और यहाँ पे फिर से ये पुट करना है आपको लाइक दिस, और ऊपर से इसको ऐसा कर देंगे, और इसको लाइक दिस। अभी मैं बहुत ऊपर के ऊपर कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं प्रिसाइजली वर्क नहीं कर रहा हूँ, बट आप क्या कर सकते हो, जब भी आप काम कर रहे हो तो आप इस टाइप से अच्छे से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूंगा, फील्ड से ये कलर सिलेक्ट कर लूँगा, तो सी, तो वी हैव, अगर मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ तो अभी हमारे पास 2 ग्राफ आ गए, करेक्ट। Yes, तो sir. सिमिलरली आप दूसरे ग्राफ्स भी बना सकते हो, करेक्ट। Yes, sir. तो अभी इसको एनिमेशन दे दूं मैं, मतलब जिससे कि आपको पता चले कि कैसे करना है। Yes, sir. समझ गया. हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये शेप लेयर 2 सिलेक्ट किया मैंने, करेक्ट। तो इसको मैं बड़ा करूँगा, और इसका जो एंकर पॉइंट है इसको मैं जूम करके, ये एंकर पॉइंट कहाँ पे जाएगा तृप्ति, अगर हमें लेफ्ट टू राइट एनिमेशन करना है तो? जो फर्स्ट उसका एंकर पॉइंट है. यहाँ पे, करेक्ट। Yes, sir. ओके, तो अभी इसको एनिमेशन दे देते हैं। तो इसको एनिमेशन कैसे देंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म स्केल का बटन ऑफ कर देंगे, और वर्टिकल स्केल जो है, वर्टिकल स्केल, इसको पहले क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। इसको बोलेंगे कि टॉगल एनिमेशन चालू कर दे, कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे, और यहाँ पे बोल देंगे इसको 100 कर दो, ठीक है। तो अभी इसका एनिमेशन क्या होगा, ऐसा आ गया। अभी इसके बाद दूसरा ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, लेयर शेप 2 जो है उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। शेप 2 पे क्लिक करेंगे, और शेप 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से जो है, सॉरी, शेप 1 को क्लिक करेंगे इस टाइम पे,
और शेप 1 की जो प्रॉपर्टीज है वो खोल लेंगे, और इसका एंकर पॉइंट कहाँ पे रखेंगे तृप्ति? ये यहाँ पे है तो सर वही मतलब जैसे फर्स्ट वाले बार में रखे थे वैसे ही इसमें भी यहाँ रखेंगे। चलेगा? यस सर, यस सर। ओके, तो अभी इसको क्या करेंगे आप बताओ। सर स्केल में जो यूनिफॉर्म स्केल है उसको अनचेक करेंगे, और जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्केल है उसको 0 पे लेकर जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग से उस 0 से शुरू होगा इसीलिए। हाँ, और फिर इधर मतलब टाइम चेंज करके, ओके, मतलब हाँ, और उसको 100 पे लेकर जाएंगे। 100 यस लेके गए। तो अभी प्ले करूँ? या ओके, आ गया। यस सर। तो ऐसा आप पूरा ग्राफ बना सकते हो। अगर ये रेफरेंस है आपके पास, आपने स्क्रीनशॉट या उसका इमेज ले लिया, उसके ऊपर आपको क्या करना है? ओवरराइट करना है ये चीज। यस सर, हो जाएगा? थैंक यू। यस सर। आसान है। एनीवन? अभी जैसे तृप्ति ने क्वेश्चन पूछा तो आपको कुछ डाउट है? कोई भी प्लीज पूछ लीजिए अभी के अभी। एनीवन? नो सर। ओके, तो ये चीज है कि अगर हमें कुछ ग्राफ्स बनाना है या ऐसे कुछ चीजें, तो अभी are you talking Are you about thinking graph? about graphs? See this. Are you willing to give the example of car running? तो अभी इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ लाइक दिस, Graphs. See this. Are you willing to give the example of car running? Or anything will make ओके, और इसको यहाँ पे लेके जाके कंट्रोल किए और डिलीट। or anything will make your presentation live. Okay, so let's dive into it. अभी भी ये बहुत ही बोरिंग है, आई एडमिट कि ये बहुत बोरिंग है। तो अभी इसमें थोड़ा सा जान लाना पड़ेगा, ठीक है? तो जान कैसे लाएंगे इसमें? तो मैं जाऊंगा हमारी वेबसाइट पे और इसको बोलूँगा कि मुझे म्यूज़िक चाहिए, ठीक है? तो मुझे कॉर्पोरेट म्यूज़िक चाहिए। तो कॉर्पोरेट म्यूज़िक में देखूंगा, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। ये म्यूजिक है हमारे पास, मैं डाउनलोड कर लिया इसको। अभी इसको इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या कुछ और करेंगे? प्लीज बताइए कोई। तो ये जो ऑडियो है इसको क्या करेंगे हम? कोई है? इसे हम उस फोल्डर में डालेंगे। करेक्ट, करेक्ट, ग्रेट। तो उसको पहले क्या करेंगे, वो फोल्डर में जाएंगे, ऑडियो वाले फोल्डर में इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे इस ऑडियो पैनल में, ठीक है? तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसा। So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? अभी क्या हो रहा है, अभी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ रहा है बट जो ऑडियो है वो कम है, करेक्ट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑडियो जो है वो कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑडियो मिक्सर का है ऑप्शन, करेक्ट? तो अभी ये कौन सा ऑडियो 3 है, A3, और ये क्या है, A3। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको डाउन कर दूंगा। So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry. ओके, अभी प्ले कर दूं मैं इसको फुल स्क्रीन में, ठीक है? So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry. Video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? See this. Are you willing to give the example of car running? Or anything will make your presentation live. Okay, so let's dive into it. So, क्या लग रहा है कि हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं एक बोरिंग प्रेजेंटेशन को? यस सर, डेफिनेटली। यस सर, डेफिनेटली। तो क्या अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जैसे वीडियो एडिटर्स या सिनेमाटोग्राफी वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो जब वीडियोस प्ले करते हैं तो हमें बहुत अमेजिंग लगता है कि यार कितना प्रोफेशनल लग रहा है, कितना बढ़िया प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या आप भी कर सकते हो अभी? ये प्रेजेंटेशन जो आपका पीपीटी है पावर पॉइंट से प्रीमियर प्रो पे जाके, क्या लगता है? यस सर। यस सर, यस सर। अभी क्या है ना, बट फिर भी टिपिकल इंडियंस जो है वो वीडियो फॉर्मेट देख के खुश नहीं होंगे। क्या लगता है आपको?
उनको सिर्फ पावर पॉइंट देखना है सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स से हमारा जो वीडियो है, वीडियोस में जैसे पॉइंटर्स होते हैं, करेक्ट। पहले डाटा एनालिटिक्स हो गया, फिर बाद में ऑटोमोबाइल्स हो गया, लेट्स से टाइप ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, तो हम उसमें क्या करेंगे, डाटा एनालिटिक्स, बाद में फिर से ऑटोमोबाइल्स, ये वो सब टॉपिक्स हमें दिखाना है। तो हमें अभी हमने सिर्फ ऑडियो एडिटिंग देखा, बट टेक्स्ट तो देखा ही नहीं। टेक्स्ट तो चाहिए ना कुछ करने के लिए, करेक्ट। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑलरेडी एनिमेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लोअर थर्ड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लोअर थर्ड के लिए हम देखेंगे कुछ, जैसे बोल्ड लोअर थर्ड लेफ्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप प्ले करोगे तो आपको दिख रहा होगा। पहले तो मैं इसको रूलर्स को बंद कर देता हूँ, रूलर्स बंद, ठीक है। So, are you willing to give? दिख रहा है यहाँ पे नाम आ रहा है अपना, इंसर्ट नेम टाइटल। So, are you willing to give? तो यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और ये जो यहाँ पे इंसर्ट नेम टाइटल लिखा है वहां पे जाके थोड़ा अगर स्क्रॉल करोगे, या यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टी पे क्लिक करके यहाँ पे आपका नाम डालना है या प्रेजेंटेशन का नाम डालना है, वीडियो एडिटिंग वर्कशॉप, ठीक है, बाय ऋतिक, ठीक है। So, are you willing to give a? So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same. तो सिमिलरली क्या आप बाकी वीडियोस के टॉपिक्स को भी टेक्स्ट डाल सकते हो, यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो अभी ये एक बेसिक आइडिया है वीडियो एडिटिंग का। तो जैसे आप भी आपके स्टडीज में देखते होंगे कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे MBA सिखा दो, क्या आप एक दिन में सिखा सकते हो मुझे? मैं फिलहाल के लिए स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, मुझे थोड़ा बात करना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे MBA एक दिन में सिखा दो, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हो? नो सर। ओके, तो क्यों नहीं सिखा सकते? बट आप तो मुझे बुक्स में जो सिलेबस है वो सिखा सकते हो, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम एक्सपीरियंस के साथ गेन करते हैं, करेक्ट? अग्रीड? यस सर। करेक्ट। तो सिमिलरली विद वीडियो एडिटिंग, जब आप, मैं देख रहा हूँ आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं 3 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैं आज परफेक्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे मैं सीख रहा हूँ ये चीज़। तो सिमिलरली आप भी, अभी ये बेसिक एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया, तो आप एक दिन में उसको एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते, बट आप जैसे जैसे उसको जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत आसान होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मे भी अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये चीज़ कि अरे इतना इतना करने में इतना टाइम लग जाता है, इतना इतना करने में इतना टाइम लगेगा, तो फिर बाकी की चीज़ें कैसे करेंगे। बट लेट्स से कि आज थोड़ा टाइम जा रहा है, आज आपको एक वीडियो बनाने में लेट्स से 10 घंटा लग गया या 5 घंटा लगेगा, बट जब आप वो प्रेजेंटेशन दोगे और जब आपको सब बोलेंगे कि यार लेट्स से तृप्ति, मोइन या किसी ने, राजेश्वरी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था, बहुत बढ़िया, तो उस टाइम पे या मैं आपका एक कॉमन, आप सब MBA स्टूडेंट्स हो राइट? या मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी। आप क्या कर रहे हो फिलहाल एजुकेशन? सर मतलब सभी का ग्रेजुएशन अलग अलग है, कोई BE से है, कोई BCA, कोई MCA, ओके, सभी का अलग अलग है। ओके, तो लेट्स से टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वीडियो एडिटिंग, चलो ठीक है, वीडियो एडिटिंग का ही बोलते हैं। तो लेट्स से मुझे लगता था कि यार वीडियो एडिटिंग इतना करेंगे तो मतलब इतना टाइम लगता है वो चीज़ को, तो चलो कुछ तो काम जुगाड़ू कर देते, कुछ तो ऐसे ही टाइम पास बना के सर को सबमिट कर देते। बट जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त जो है वो अच्छा एडिटिंग करके सर उसको अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि अरे वाह कितना अच्छा बनाया मेरे दोस्त ने, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने क्या सोचा कि चलो मैं एक बार थोड़ा मेहनत लगेगा बट बना देता हूँ। जैसे आप भी आपके जैसे अगर कोई कोडिंग में, तो कोडिंग आपको पता होगा कि बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत सारा कोड वोड बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बट उस टाइम पे कभी कभी बोर होते हैं तो हम सोचते हैं चलो कुछ तो काम जुगाड़ू कर देते हैं,
बट जब अगर हम अच्छा कुछ कोड लिखते हैं और अच्छा कोड लिखने के बाद क्या होगा, सर हमें अप्रिशिएट करेंगे और लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया किया है, तो उस टाइम पे हम और थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएंगे कि वो चीज़ हमें और अच्छे से करनी है। करेक्ट। तो सिमिलरली ये प्रेजेंटेशन बनाने में, जब आप वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको मे बी बोर हो सकता है, बट जब आपका फाइनल आउटपुट आएगा, जब आपको लोग देखेंगे, 100 लोगों में से अगर आप वीडियो एडिटिंग से प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आई गारंटी कि आपको और आपके कॉम्पिटिटर को या आपके ओपोनेंट को लोग देखेंगे तो आप में बहुत सारा क्या बोल सकते हैं, आप में डिफरेंस दिखाई देगा। क्या हो गया नेटवर्क को? ओके, तो अभी आवाज आ रहा है मेरा? आई एम रियली सॉरी, अभी मेरा आवाज आ रहा है? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अभी मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Now we are ready. सॉरी, ये नेटवर्क इश्यूज ऐसा होता है Yes. कि कब कब आएगा कुछ पता नहीं। आई एम रियली सॉरी उसके लिए। तो वही चीज़ है कि आप अगर वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छे से करते हो तो आपका जो अपोनेंट रहेगा उससे आप 100% अच्छा दिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी ये तो हो गया, हमने देख लिया कि कैसे करना है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। वीडियो एडिटिंग तो हो गया, बट उसका वीडियो में फॉर्मेट कैसे निकालेंगे? करेक्ट। तो वीडियो फॉर्मेट कैसे निकालेंगे? आसान है, जस्ट गो टू फाइल, गो टू एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन मीडिया। आफ्टर गोइंग टू मीडिया, जस्ट क्लिक ऑन H264 और यहाँ पे आउटपुट नेम जो है, आउटपुट, अभी आउटपुट कहाँ पे निकालेंगे प्लीज टेल मी? आउटपुट कहाँ पे सेव करेंगे? फोल्डर में, रेंडर में। ठीक है, आउटपुट और रेंडर, और यहाँ पे फाइल का नाम ऐसे ही रख देंगे, मिक्स किट अ कपल ऑफ मैन एक्सप्लेनिंग, ऐसे ही रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है वो देंगे सर। ओके, तो क्या था हमारे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है, अंडरस्कोर V1 वर्जन 1, और यहाँ पे यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी और हिट एक्सपोर्ट। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जितना आपका एडिटिंग का हेवी है उतना आपका जो प्रेजेंटेशन रेंडर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया रेंडर। अभी मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, ऋतिक राजगिरी इज नाउ प्रेजेंटिंग। सो अभी जब मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं तो मैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट से अच्छा क्या करूँगा, मेरा जो रेंडर है मैं उसको सिर्फ डबल क्लिक करूँगा और मैं चुप बैठ जाऊँगा। So, are you willing to give a presentation which makes your audience wow? But same PPTs, same templates, again the same boredom. But don't worry, video editing will make your audience may say wow. Are you thinking about graphs? See this. Are you willing to give the example of car running? Or anything will make your presentation live? Okay, so let's dive into it. Done. कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, और इम्प्रेसिव भी। पक्का कि ऊपर के ऊपर ही? नहीं सर, अगर हम ऐसा बनाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में तो ऑब्वियसली वो इम्प्रेसिव लगेगा ना। मतलब एज यूजुअल वो बोरिंग हम बोलेंगे, वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तो उनको देखने में भी अच्छा लगे, वो इंटरेस्टिंगली देखेंगे भी। करेक्ट। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेजेंटेशन देखने से अच्छा अगर वो वीडियो देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली ये अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो प्रेजेंटेशन है उसमें टेक्स्ट है,
नो बैकग्राउंड म्यूजिक, हम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद हम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उससे अच्छा बी कॉन्फिडेंट, जस्ट रिकॉर्ड इट एंड वीडियो अच्छे से बना लो और प्ले करो और सिर्फ चुप बैठ जाओ और कुछ मत करो। और ये अभी स्टोरी की तरह लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी कर रहे हैं, एक मेन बॉडी कर रहे हैं और फिर सस्पेंस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप आपके प्रेजेंटेशन में करते हो तो आई गेस आपके प्रेजेंटेशन को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस ये सेशन अभी हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। तो बिफोर एंडिंग आई वांट एवरीवन्स फीडबैक। एवरीवन अगर वन बाय वन अगर आप फीडबैक दे सकते हो मुझे, तो आप दे सकते हो कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं सिखाते वक्त अगर मेरी कोई गलती हो गई, दिस फीडबैक इज जस्ट फॉर टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, क्या चीज़ें ऐसी थी वर्कशॉप्स में जिसमें आपका जो इंटरेस्टिंग लेवल था या नहीं भी था, तो ये चीज़ें के मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आपसे। तो मैं वन बाय वन सबको पूछूंगा, तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके आपका जो ये है फीडबैक मुझे दे सकते हो। तो आई कम टू रूपाली अवार्ड। यस सर, सेशन आज का सेशन है वो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे बहुत सी चीज़ें हैं वो मालूम चली। मुझे नहीं पता था कैसे करना है एनिमेशन वगैरह, इमेजेस के ऊपर कैसे देते हैं। रूपाली आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है, सॉरी। हेलो सर, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ सर, इंटरेस्टिंग था आज का सेशन। मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम हो गई। मुझे नहीं पता था कि वीडियो एडिटिंग कैसी करनी है ये वगैरह। करेक्ट। तो मैं जरूर मेरे प्रेजेंटेशन में ये करूँगी फ्यूचर में। करेक्ट, थैंक यू। तो लेट्स कम टू राजेश्वरी। 1 minute Rajeshwari, I'm really sorry just to interrupt. Kushal ji, are you there? Kushal sir? Kushal sir. Yes, I'm really sorry for shifting the platform because no, that's fine. I think it might have got disconnected. yes, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उसके बाद व्हाट हैपेंड, मैं होस्ट नहीं था, तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ लीविंग द सेशन लेट्स चेंज द प्लेटफॉर्म। Yeah, completely fine. So how much time happened? I was not here. It's 58 minutes ago. I have already recorded the session. Okay, great. Yes. So if everybody is here, you guys can please continue on this. There's no problem. Okay, fine. So we are just taking. We have ended the session. We are just taking a feedback about the session, and after that we are great to conclude and stop the session. Okay. All right. So No worries. Yeah. let's go to Rajeshwari. Yes, sir. Overall experience is really good. Actually, before this video session, we are just going to that old version of presentation, but now we will definitely implement this type of presentation so that everybody will take interest in our project. Correct. Yeah. Thank you so much for this session, sir. It's really interesting. Thank you so much. Let's go to Moin. Yes, Moin. सर, सेशन इंटरेस्टिंग था और आपने जैसा बताया उससे और भी इंटरेस्ट बढ़ गया सर। Yes, great. सर, हम ट्राई करते सर हमारे इस प्रेजेंटेशन में ऐसे वीडियो एडिटिंग करके शो करो सर। ओके, और मेरा सिखाने में कोई गलती हो तो नहीं गई? कुछ बोल तो नहीं दिया मैंने? नहीं सर, आप अच्छा पढ़ाते हो सर, बस वो मीन्स थोड़ा नहीं क्या वो आप जो प्रोसेस करते हो तब थोड़ा स्लो हो जाएंगे तो थोड़ा नहीं कैच करने में इजी हो जाएगा। करेक्ट। एक्चुअली क्या हो गया था, ये हमारा प्लेटफॉर्म मतलब अचानक वो जूम बंद हो गया, तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था वो चीज़ को लेके। तो ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है मैम। सो लेट्स गो टू प्रियंका। यस प्रियंका। यस सर, आपने जो भी चीज़ें बताई वो क्लियर हो गई है। मतलब बहुत सारी, मुझे वीडियो एडिटिंग का कुछ आता नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और अंडरस्टैंडेबल था आपका जो सेशन आपने जो लिया अभी, इंटरेस्टिंग था। एंड हम अपने प्रोजेक्ट में ये यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन सर।
Thank you so much. Let's go to Shubham. Yes, Shubham. Yes, sir. It is great, sir. It was great. Okay, so हमने बहुत सीखने मिला, sir. correct. Thank you so much. Yes, sir. Let's go to Trupti. Yes, Hello, Trupti. sir. Yes, Shubham. Sir, link share कर दो उसकी, sir. Yes, Download ठीक है. Okay, let's Thank go you. to Trupti. Yes, the overall experience, and it was good and interesting as well. I had used earlier any software which was paid, but आई थॉट दैट मतलब ऐसा था कि मैंने वीडियो बनाया और एंड पे आकर ऐसा हुआ कि वो पेड है लेकिन ज़्यादा अमाउंट था, सो द ओवरऑल जो भी मेहनत थी वो उसमें चलेगी, फिर मुझे प्रेजेंटेशन पे ही शिफ्ट करना पड़ा था, बट टुडे आई गॉट द free software from where I can create the video. Okay, so just let me tell one thing to each and everyone. Premiere Pro जो है वो भी एक पेड सॉफ्टवेयर है. वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आपको अगर वहाँ पे एक ट्रायल वर्जन मिलेगा क्रिएटिव क्लाउड का, जिससे कि क्या होगा, आप 7 days का ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इसका मुझे इन फ्यूचर भी बेनिफिट हो सकता है, तो आप वहाँ से भी उसको एक्सेस ले सकते हो, या आप गूगल करके भी देख सकते हो. देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज़ द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, तो यू कैन यूज़ दैट. और मैंने अभी क्रिएटिव क्लाउड की जो एडोबी की लिंक है वो डाल दी है चैट बॉक्स पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर. और साथ साथ अगर आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है तो आप लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो. लिंक्डइन पे मेरा नाम है ऋतिक राजगिरे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी ओवर देयर. और ठीक है, तो उसके बाद मेरा जो ईमेल आईडी है वो भी मैं डाल देता हूँ 26@gmail.com. तो दिस इज़ माई ईमेल आईडी. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी यू कैन डू दैट एज वेल. Okay, so let's go to Mohini. Yes, Mohini, can I have the feedback about today's session? Yes, Mohini, are you able to unmute yourself? If not, it's fine. Let's go to Pooja. Yes, sir. It was a great session. Okay, thank you so much. ये हम अपने प्रेजेंटेशन में यूज करेंगे प्रोजेक्ट में. ओके, फाइन. सर एक प्रॉब्लम है. यस, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना 4.8 GB रैम, तो मेरा 2 GB रैम है, तो नहीं होगा क्या? हो जाएगा, बट वो बहुत स्लो चलेगा. ठीक है, तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, तो आप ट्राई करके देख सकते हो. अगर चलता है तो ठीक, अगर नहीं चलता है तो मे बी हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. Okay, sir. Thank you. We have Prachi here. She is my teammate. तो I guess वो भी थोड़ा सा कुछ बोल दे तो it will be great. Yes, Prachi, please try to unmute yourself. I guess she has problem to unmute herself. Okay, fine, no issues. So Kushal ji, are you there? Kushal ji, I guess he is today he is busy in some task. So I guess this is the end of the session, and it was a nice meeting with you all. So I just wanted to share a feedback link with you, and please I request you all to please give me feedback on that particular link. Just give me 1 minute. Okay, just give me 1 minute. Yeah, 1 minute just. Okay, so I'm sharing a feedback link with you all. If you liked my session, just give me a rating over there. You can share feedback of today's session, and yeah, that's all. So I hope everyone got to learn new things from this session, and I hope it was an interesting session. And if I made any kind of mistakes during the session, I really sorry for that. And after all,
at the end, I just wanted to say that don't try to stop your creativity. Don't let your creativity down, and start creating and start exploring. So I guess we are good to go now. So everyone, bye, take care, and be safe, be at your homes, and keep exploring. Okay, so bye bye everyone. I'm closing the meeting here. Yes, sir. Thank you. Bye Yeah, bye. Bye, sir, yeah. and thank you